A painter draws 64 equal squares of 1 square inch on a square canvas measuring 64 square inches. Okay, so it is just like a chessboard, right? So you have 64 squares. Now it says that she chooses two squares, 1 square inch each, randomly and then paints them. What is the probability that two painted squares have a common side? Okay, so जो हमारे total outcomes हैं वो होंगे 64 C2, राइट? क्योंकि 64 में से कोई भी दो स्क्वायर आपने रैंडमली पिक किए हैं, राइट? अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो दो आपने स्क्वायर्स प्रिंट किए हैं, मतलब पिक किए हैं बेसिकली, उनमें एक कॉमन साइड हो। तो हमें कॉमन साइड वाला केस समझना है। लेट्स टॉक अबाउट अ रो फर्स्ट। सो जब आप एक चेस बोर्ड बनाते हो, सो यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट? एंड सिमिलरली यू हैव 1 2 एंड सो ऑन। तो आप इसको इस तरीके से देखो कि हाउ मेनी कॉमन साइड्स आर पॉसिबल इन अ रो। So we have 1, we have 2, we have 3, 4, 5, 6 and 7. So in a row we can have 7 common sides. So how many rows are there? So we have 8 rows, right? Similarly for columns also, so we have 1, 2 and 7, right? So 7 into 8 again, right? So this becomes your 56 into 2, which is 112. And जब आप इसको solve करते हैं तो ये आता है 112 upon 2016, right? Which means A option is absolutely correct.